हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बट्टा फास्ट एंड काफ़ी एक मज़ेदार किस्त है आज आपके लिए क्योंकि मेरे साथ पाकिस्तान की सारी उम्मीदों के शाहकार हमारा यूथ इस प्रोग्राम पे हमारा साथ हमने दावत दी है तो वी हैव ऑन द शो रामीन सलमान एंड रायान हु इज़ आल्सो नोन एज क्रिटिक टू आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन द शो Thank you for having us. Yeah, happy to be here. अमेजिंग ओके सो थोड़ा सा मैं आप लोगों को तारुफ दे दूं इन दोनों का तो मैं सोच रहा था बेसिकली लाइक 10 साल पहले मैंने क्रिक इन्फो के लिए लिखना शुरू किया था और मेरे साथ मेरा दोस्त हसन चीमा लिखते थे एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू चीमा फॉर दैट प्रोसेस क्योंकि हम दोनों आई फील वर लाइक काइंड ऑफ अ येन एंड यांग ऑफ थिंकिंग अबाउट क्रिकेट कि चीमा एनालिसिस डेटा वगैरह की तरह करता था आई वांट टू टॉक मोर अबाउट लाइक what it means to be a fan, what the feels are. और तो मैं अब ट्विटर वगैरह कम इस्तेमाल करता हूँ बट ये जो आज हमारे दो मेहमान हैं मेरे ख्याल में उसी येन एंड यांग की अक्कासी करते हैं कि आई फील Raiyan has been referenced on the show previously as Chima's protege, which is not literally, I thought was not literally true, मगर ये अभी नमूदार हुए हैं उसी dimly lit poor internet kind of background से तो मुझे बहुत अब ताज्जुब हो रहा है कि क्या चीमा ट्रेनिंग दे रहा है कोई like terrorist camp for cricket statisticians where they all share like horrible stats against your favorite player or something. But that's Ryan if he's a yin, and then Rameen is like somebody I really enjoy reading. इनकी tweets निहायत ही लुत्फानंदोज होती हैं. She's also a really really good writer. Has written some excellent blogs on cricket. And so yeah, so I wanted to get these both sides of the coin. And so let's start with आज वाला मैच तुम दोनों ने देखा है क्या तासुरात हैं क्या फील्स हैं अभी अभी खत्म हुआ है I feel like halfway through a match, I can tell the sort of discourse it will lead to. And then at that point, I just think it's useless to open Twitter because I'm like, मुझे पता है क्या हो रहा होगा. There'll be one tweet about Babar, and then there'll be one tweet complaining about Babar, and then there'll be one tweet complaining about people complaining about Babar. So at this point, I'm just like, okay, same old, just a Sunday. Raiyan, what about you? Yeah, see, so you guys got that on Twitter, but since this match was on Sunday, so I had to sit with my father and watch the match. So I got the whole Twitter feed from him instead. अंकल की क्या राय थी किसको ब्लेम कर रहे थे वो basically mostly he's not a fan of Babar. Like Babar T20 का player नहीं है. He doesn't like Shaheen either. तो दोनों FCs को खराब. And then he doesn't like Azam either. When I start listing it. So who does he like? उनका seal of approval किसको मुश्किल question है. He likes like Imran Khan and Wasim Akram. Yeah. उसके बाद बस Miyadad. My family is बिल्कुल I think to my a family's certain go-to degree. is Miyadad. Yeah. 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 My family's ये go-to reference is बड़ी Yeah. रिवीलिंग बात आप दोनों ने की है जिस पे हम लोग आगे जाके गौर से बात करेंगे बट ओके सो 2 मैचेस हो चुके न्यूजीलैंड में 2-0 डाउन है पाकिस्तान एंड एक तरीके से मतलब हम लोग जो बात करते आए हैं कि ऐसा फील हो रहा है कि जब से वो एशिया कप में बारिश हुई थी उसके बाद से पाकिस्तान को एक लानती माहौल में है तो I'll ask both of you कि just like talk about since that Asia Cup, the World Cup, the Australia tour and now this T20. Sorry मेरे घर के बाहर कोई I don't know जमातियों की रैली चल रही है कुछ so if it's very loud but हाँ so Raiyan let's start with you what have the whatever data shata world matrix computer के through तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है for the last 6 months what have the fields been like what are your takeaways Well, data तो देखने के लायक नहीं रहा है क्योंकि माशाल्लाह से जहाँ भी देख रहे हैं just everything is terrible. There's nothing to hang on to.
सो बस वो पाकिस्तान क्रिकेट फैन की जो होप होती है वही चल रही है। तो एशिया कप के दौरान तक ये चले। अभी कुछ लोग इंजर्ड हैं, कुछ लोग लाइक अभी ठीक हो जाएगा सब। वर्ल्ड कप पे दे रैली टुगेदर। फिर वर्ल्ड कप के दौरान, एक्चुअली वर्ल्ड कप के दौरान भी आपको पता था कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज आ रही है। तो जो भी करना है यार अभी कर लो, वरना फिर मतलब 1 महीने के लिए भूल ही जाओ। एंड देन ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान यू couldn't even say कि कोई बात नहीं T20 सीरीज आ रही, बिकॉज T20 सीरीज आर जस्ट they're nothing to us now, बस time pass है। So you can't even say कि we were looking forward to the T20 series। तो looking forward वाली चीज भी कोई नहीं है, बस है कि भाई कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी तो दे दो। वैसी भी वो लाइक हमने तो उसी बात पे खुशी ले ली कि जमाल के चले 6 विकेट हो गए, उसने रन कर लिए, उसी बात पे हम लाइक दैट्स बीन पाकिस्तान क्रिकेट्स हैप्पीएस्ट मोमेंट इन द पास्ट फ्यू डेज कि ऑस्ट्रेलिया पे बुरी तरीके से नहीं हारे। Ramin, do you agree And that was the happiest moment we've had in the last 6 months? I think so, because I think I had a really bad feeling in the 2nd September India game, the one जिसमें हमारी innings got washed out, because people were like, oh, pace attack, pace attack, pace attack, and I'm just, जब भी बहुत ज़्यादा तारीफ होनी शुरू हो जाती है ना, मेरी घबराहट शुरू हो जाती है, because I'm like, don't do this. ठीक है, and then I think next Bangladesh game में Naseem gets injured, but we won that match, so it was easy to be like, अच्छा चलो अब वापस आ जाएंगे. And then after that, it was like a downfall of like mythical proportion. Like someone would have to have like a voodoo doll set of like all 11 Pakistani players, and then just constantly be like pinning them for this to happen, because everything that could go wrong went wrong. So beyond the point, I was just like, कि हम क्यों करें? Like at one point, it's masochistic to like keep following cricket as a Pakistani fan, because आपको पता है कि आगे कुछ अच्छा आ नहीं रहा है. And the thing about T20s against New Zealand is that we play them like 6 times a year. So at this point, I'm like, okay, it's happening again. ये जीत जाएंगे. अब वो भी नहीं जीत रहे, तो I'm like, okay, देखते हैं. तो ओके, सो इसी से मतलब ये वही जो बात की कि मतलब मेरे लिए एक बायलैटरल T20 सीरीज के बारे में बात करना निहायत ही वक्त का ज़िया है। और इस पे मतलब अगर आप लोग ने शो देखा हो या ऑडियंस में लोग देखा, तो आपको पता है कि मैं और उस्मान रोते रहते हैं कि क्रिकेट एक बहुत ही स्टूपिड और टेरिबली रन स्पोर्ट है। और फिर इसलिए होता है कि एटलीस्ट जो 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 एक आपकी दिलचस्पी के लिए जो फोकस पॉइंट आ जाता है वो ये कि आपका कोई आईसीसी टूर्नामेंट है, और अब पाकिस्तान का अगला टूर्नामेंट वर्ल्ड T20 है। तो सबसे पहले लाइक रामीन तुमसे शुरू करते हैं। क्या तवक्को है कि पाकिस्तान कहाँ तक पहुंचेगा? उससे पहले क्या कप्तान उस टूर्नामेंट तक शाहीन ही रहेगा, या कोई स्कैंडल हो जाएगा, या इंजरी हो जाएगी? वाइब्स क्या आ रही हैं? Okay, so I had high hopes from the World Cup. I don't know why, but I did. At one point, I was like, we can't do that badly, and then we did slightly worse than that. And even with T20s, I would say it's sort of our strongest format right now. So I think we should at least make it to the semis, but you never know, because एक तो India का group stage match होगा, which I'm writing it off. Like, I don't want to think about it, जो होगा उसी दिन देखेंगे, right? But then we have these fairly smaller teams, so you think it would be straightforward, but we also thought it would be straightforward when we were playing Zimbabwe in 2022. So you never really know. Like, I've become very careful with the way I ration how hopeful I am. I'm like, अभी देखेंगे, अगर उम्मीद करने की गुंजाइश बची तो कर लेंगे, वरना रहने देंगे. But I think we should hopefully aim for a semi-final spot. I think we should win it. I hope we win it, but थोड़ा realistic. Kaptani ka, I don't know. I really don't know, because you have a fast bowling captain after you've lost one of your previous fast bowlers before an ICC tournament just this year. So I think we should be saving Shaheen, whatever that means. But I feel like we won't rest him until he gets one win as captain. और जैसी हमारी किस्मत है, he'll get that one win in the 10th T20I we play against New Zealand this year. तो बस दुआ कर सकते हैं. Raiyan, is मतलब in terms of how you're looking at the game, क्या T20s पाकिस्तान का strongest suit है अभी? और compared to other contenders, where do you rank Pakistan in the coming World Cup? Yeah, so basically coming up to the World Cup, मैंने बहुत लड़ाइयाँ कर ली थी ट्विटर पे
everybody was like, because maybe like tha ke Pakistan have a very good chance this World Cup, but people were conflating like very good chance to favorites. तो फिर मुझे लगना पड़ा था कि Yeah. नहीं, favorites नहीं है, बस चांस अच्छा है लेकिन favorites नहीं, because favorites तो वही लोग रहेंगे, but हमारा चांस मतलब कंपैरेटिवली वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता है और इंडिया में हो रहा है, तो चांस ज्यादा है. अब वो दूसरी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट कभी चांस की बात सुनता नहीं है, बिकॉज सिमिलरली ड्यूरिंग द वर्ल्ड T20 जब ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, मैं तो सब लोग को कह दिया था ये वाला तो भूल जाओ, ठीक है, इन लोग को बैटिंग ही नहीं आती है ऑस्ट्रेलिया में, इनसे 150 नहीं हो पाएगा, तो ये भूल ही जाओ, वर्ल्ड कप कुछ नहीं होने वाला है, 2023 का सोचो. In the end, we did much better in 2022 than 2023. So what even is the point of thinking about this? लेकिन क्योंकि मैंने खामखा सोच लिया, so I feel actually in 2024 we should be favorites, especially if you look at like जैसी टीम ये बना सकते हैं, बनाएंगे तो नहीं लेकिन बना सकते हैं, and their performances in the last few T20 World Cups, which has been like kind of like building up to a crescendo, you would hope. So in looking at all those things, और जितना मतलब ये टीम कर सकती, they should be definitely in the sense के favorites mean like top 3 or 4 teams में तो होने चाहिए, which means that anything less than a semi-final should be an underperformance, frankly. या अब वो दूसरी बात है कि वैसे भी क्रिकेट में पाकिस्तान क्या करे. कुल मुश्किल से 10-12 ही तो टीम है, तो उसमें भी अगर आप टॉप 3 में नहीं है, टॉप 6 में है, तो ये कौन सा तीर मार रहे हैं. बट क्या कहते हैं कि लाइक रामीन, तुम्हारे ख्याल में जो बात अभी यही रहा की कि जो ये टीम खिला सकते हैं, और वो इसलिए उस जुमले की फ्रेजिंग इस तरीके से क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान में सिलेक्टेड हो या बोर्ड हो या जो कुछ भी हो, वो कोई ना कोई हैंड तो करेगा. Under like and obviously as kind of unfortunately a cricket insider होने के हमें अंदर की जो भी बातें वगैरह पता चल रही होती हैं, तो we have our own opinions on the board, but like as a fan, जो हाल ही में बोर्ड के अंदर टमल्ट रहा है, बिलखुसूस वर्ल्ड कप के दौरान जहाँ पे शोएब जट को इंटरव्यूज वगैरह मिल रहे थे, पुलित्जर प्राइज विनर शोएब जट, तो उसपे like how much do you feel it affected you as a fan? Like how much were you caught up in that soap opera? I mean, you didn't really have a choice, did you? Like every day it was a new sort of, देखते हैं आज क्या होगा. एक दिन प्रेस रिलीज आ रही है, फिर दूसरे दिन दोबारा प्रेस रिलीज आ रही है, and then तीसरे दिन उन दोनों प्रेस रिलीज को मिला के कोई तीसरी प्रेस रिलीज आ रही है जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी. But also, as far as like selectors and team combinations is concerned, I don't know if it's deliberate, but we just kept doing stupid things. Like, we rested Mohammad Haris. See, the thing is, it's never about our talent or it's never about the skill ceiling, because if anything has been proven to us in like the past few years is that we have quite a high skill ceiling. We have a lot of talent. We have a lot of resources in that sense. But you rest Mohammad Haris क्योंकि आप उनको rest दे रहे हैं. He's played like 8 international games. What are you resting him from, right? And acha, he's not in the squad. It's fine. Ab to ho gaya, right? The whole Azam Iftikhar batting order situation. It's like you're making a sandwich and then you're putting the butter on your hand instead of the bread, and then you're like, "Ye mere haath se kyun gira?" It's because you put the butter on your hand. It's like if someone is like because Azam has done so well in PSL at his appropriate batting position. जिसकी मुझे बहुत कम sense है, if I'm being honest, but like but you keep doing the same thing over. It's not even about the squads you pick, it's about how you utilize the squads you have picked. If you've made a mistake in picking the 15, ab wo to ho gayi na, but like even within a match you can do things that maximize sort of your players' utilities, and if you're consistently not doing that, then it gets really frustrating as a fan, because like agar hum sabko nazar aa raha hai, to ab aap bhi dekh lein wahan baithe baithe, like the people who can actually do something, hum to bas ro sakte hain. इन गेम डिसीजंस पे खास तौर पे पिछले वर्ल्ड कप में बाबर की बहुत तनकीद हुई थी, और टेस्ट सीरीज के दौरान शान पे आई थिंक लाइक एक जो तारीफ उसकी यही की जा रही थी कि अब थोड़ी कप्तानी का स्टैंडर्ड मयार जो है वो बढ़ गया था पाकिस्तान का. रयान, शाहीन हैज ऑलरेडी टेकन लाहौर टू 2 PSL टाइटल्स. उसकी कप्तानी को तुम
I guess 2 PSL titles. Am I wrong? Like, Yeah, I think so, right? Yeah, since COVID, I've completely lost track of everything. But yeah, so वो कर चुका है. He's obviously shown that he's good captaincy material. Rameen mentioned कि अभी वैसे ही जिस तरीके से Cummins इतना कामयाब हुआ है. From his captaincy chops, what do you rank Shaheen as in terms of an international captain? Acha, so basically, I had like a whole discussion about this premise. I'll just repeat it. Captaincy doesn't really matter to that degree, like how much people on the outside will tell you that it matters. कि ये captain बनेगा तो सब चीज बदल जाएगी, ये सारे सही decision लेगा. Because frankly, no one takes all the right decisions. Like वो हो नहीं Yeah. सकता है, and everybody जो कहते captain बनेगा, उसके भी decisions like चलो this guy will take his decision 60% of the time will be correct, 40% of the time will be wrong. देखिए ये दूसरा बंदा है, ये 55% of the time correct होगा, 45% wrong होगा. So you're just dealing with that 5% 19-20 वाली situation, और उसमें भी captaincy में which barely affects the game to that extent कि आप कहें कि ये बंदा captain बनेगा तो बिल्कुल टीम ही बदल जाएगी. जो actually आपको जो ज्यादातर decisions, and the decisions we are even criticizing right now, they're not captaincy decisions specifically. Yeah. कि इसको इस टाइम पे बॉलिंग करनी चाहिए, इसको इस टाइम पे बैटिंग करनी चाहिए, इसको पहले भेजना है, इसको बाद. ये captaincy decisions नहीं है. These are not like decisions one guy takes, and even currently not one guy is taking those decisions. These are decisions that are planned out and like reconstructed over team meetings and plannings, and it takes like 4, 5, 6 months to actually hash it out and be like अच्छा ये team हम ऐसे खिलाएंगे और ये हमारा thought process है. So that's basically what's the problem with Pakistan cricket. So by captain एक बंदा है, वो आपकी टीम मैनेजमेंट जो आपने Yeah. माशाल्लाह टीम मैनेजमेंट भी बदल दी, कैप्टन भी बदल दिया, लेकिन जो आपके कोर प्लेयर्स है, बिकॉज यू कांट चेंज योर कोर प्लेयर्स, क्योंकि कोई शाहीन को बेंच पे नहीं बैठाएगा, कोई बाबर को बेंच पे नहीं बैठाएगा, कोई रिजवान को, शादाब को. पूरी कोशिश है लेकिन अभी तक नहीं बैठा सकते बेंच पर, बिकॉज वो फ्रैंकली if you take those decisions, then that's negatively affecting your team more than कि चलो ये सही नंबर बैटिंग पे भेज देंगे आजम को, लेकिन अगर शाहीन नहीं है टीम में तो फिर फायदा क्या आजम को सही नंबर पे भेजने की. Yeah. So when you look at that like situation, and जो बोर्ड ने कोशिश की है कि हम ऐसे करते हैं कि ये बाबर और शदाब को हटा देते हैं क्योंकि ये हमको पसंद नहीं आ रहे और लोगों को पसंद नहीं आ रहे, और शाहीन और रिजवान को बना देते हैं, when all four of them have been collaborating to run the T20 team for the last 3 years. कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर आपने इस बंदे को निकाल के दूसरे बंदे को बना दिया, because they all have the same thought process and what Same they thought. think the game should be played and how they should play. So वो आपका शाहीन का, आई एम श्योर ही इज लाइक गुड कैप्टन इन द सेंस के फील्ड सही से सेट करता होगा या आगे पीछे थोड़े स्प्लिट सेकंड डिसीजन सही से लेता हो. आज भी मतलब बॉलिंग जल्दी करने आ गया था जब मार पड़ रही थी, सो दैट्स गुड फॉर हिम. लेकिन ऑल ऑफ दीज आर लाइक इंडिविजुअल डिसीजंस दैट ही कैन टेक, एंड जो कहते हैं he can affect the game to a decent like a minute degree, लेकिन जो आपकी जो large game making decisions होते हैं वो तो आपकी मैनेजमेंट करती है, वो आपके प्लेयर ग्रुप करता है, आपकी जो भी इंचार्ज ऑफ द टीम है वो करते हैं, एंड वो अभी तक आपने कोई खास उनको इनलाइटन नहीं किया है, आपने उनको समझाया ही नहीं किसी ने, क्योंकि आप माशाल्लाह से आपके कोचिंग स्टाफ ही चेंज होता रहता है और एक बंदा भी नहीं है कोचिंग स्टाफ में जो आपने कहा है कि अच्छा ये बंदे के साथ हम स्टिक करेंगे, इसका आइडिया सही है. कभी मिकी आर्थर था, कभी कोई कोचिंग स्टाफ ही नहीं था. फिर माशाल्लाह से अब मोहम्मद हफीज आ गए, उन सब के अपने अपने आइडियाज होते हैं और वो प्लेयर्स सुनने के लिए भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये लोग अभी 2-3 महीने में फिर से फारिग हो जाएंगे, इनकी बात कौन सुनने वाला है. Sorry, I went on a rant there, but basically. नहीं, आई थिंक इसमें काफी हद तक तुम्हारी बात से अगर मैं इत्तेफाक भी करूं, आई डू थिंक एटलीस्ट जो मुझे जहां तक इल्म है कि क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी इवन विद इन द टीम देयर स्टिल अ वेरी टैंजिबल सेंस ऑफ हायरार्की, और वो है कि आपके जो भी गेम प्लान्स वगैरह हैं और कुछ एटलीस्ट
कुछ अरसे के लिए जो थोड़ा अंदाजा था कि क्या गेम प्लान्स के साथ जा रहे थे, तो उसमें तब भी था कि वो आपके फाइनल इंडोर्समेंट वगैरह still comes down to one or two individuals, right? Um, and again, that's largely a facet of किस तरीके से हम as a society पे operate करते हैं कि जी आप जो you know go along with जो भी घर का बड़ा कह रहा है etc. So I do think that there has been वही बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि आपका कोचिंग स्टाफ मैनेजमेंट स्टाफ बदलता रहता है तो आपके पास एक कंसिस्टेंसी नहीं है और फिर कंसिस्टेंसी के साथ साथ जो वो प्लान्स अगर नहीं कैरी आउट हो रहे सो एवरीवनस गोइंग टू रिवर्ट टू वही जो आपका कोर है और वो जिस तरीके से खेल रहा है आई थिंक मैं ये भी कहूंगा कि एटलीस्ट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ यू नो कि अगर आप प्योरली थ्रू डेटा देखें या यू आस्क द पीपल हु आर गोइंग थ्रू इट you know a lot of players speak about these kind of intangible things, right? About like sort of कि उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया या उसने मुझे बैक किया या फलाना ढिमकाना, which is you know that's not something you can put in the scorecard. मगर I again like it sort of seems to have an impact of like those margins where जैसे कि बिल्कुल सही बात है कि भाई एक खिलाड़ी 10 साल से खेल रहा है तो एक ही तरीके से खेलेगा, but sort of you know I would say कि जो भी जिस किस्म के margins पे आप ये कर सकते हैं वो करते हैं. Rameen, what's your take on it in terms of captaincy and how important it is? I mean, I do agree with Raiyan. It is like, Hmm. I think a lot of people did say, Abhi, people were really happy when Rizwan was appointed vice captain, like rightfully so. At least we have one. But वही बात आ गई कि like this very strong core of a few players is what your team is built around. And even if you like वही बात आ गई like आप एक दायरे में चार लोगों को घुमाते रहेंगे and not a lot is going to change if the sort of core thought process is the same. It's like largely a sort of philosophy issue and it's largely like a management issue. Okay, what the approach you want to take is because I think we saw this in the Sri Lanka test and suddenly everyone was like, oh, we'll do it the Pakistan way. We're going to be aggressive and it might have sounded corny in the beginning, but it did sort of work, right? Suddenly you could see that there was this palpable shift in the way we were playing, and the results showed it. There was a very different atmosphere in the fans as well. जैसे कोई टेस्ट मैच शुरू होता है वो एक सी like उदासी सी छा जाती है, हर जगह वो नहीं थी, and that helped, and it shows that when you have um like this sort of mental stability, okay, this is the approach we're doing, but then you also have to like be consistent with it and you have to like give it the room to fail because I feel like अगर हम अगले T20 से हम शुरू होकर बाबर ने आके मारना शुरू कर दिया, बाबर ने पहले ओवर में 6 छक्के मार दिए and then next game बाबर gets out to 6 and we revert back to the way we're playing now, like and also I feel like I mean I'm contextualizing it in the New Zealand series because we have a 5-match series here, then we have a 5-match series with them in Karachi. So like if you're going to like also I think like PCB and New Zealand cricket need to have a conversation about codependency because we need to play other teams, but that's a separate rant. But if there's a place वो you're जो going to बेसिकली मुझे लगता है उनको उनको इतनी गिल्ट फील होती थी वो जब नहीं आए थे यू नो series नाजेबा जबान के लिए माजरत मगर पप्पू भोसड़ी @gmail.com ने उनसे कहा था कि टेररिस्ट अटैक हो रहा है और उन्होंने कहा हम नहीं आ रहे, तो आई थिंक उसकी ओवर कॉम्पनसेशन अभी तक चले जा रही है क्योंकि बिल्कुल वजह बात की है आपने, क्या हो गया इतने क्यों खेल रहे हो भाई हमारे साथ, बट हाँ कंटिन्यू. genuinely but मैं वही कह रही हूँ, if you want to like have a sudden shift in philosophy or a gradual shift in the way we're approaching the game itself, because a lot of these things just start from there. Like you can either want your team, all of your or like you can either want all of your batters to be like to like tee off whenever they come onto the crease, or you can approach कि कोई जितने भी रन बना ले बस हमें 200 तक जाना है, and those are two very different approaches to the game. बस आप decide कर लो कि आपको क्या करना है, because and then just give it the time to like settle, because if you're playing 10 games against a side, then if you're not going to experiment there, then where will you experiment? Because हम ये करते हैं, हम लोग bilaterals we hack them and then जैसे tournament शुरू होता है we start experimenting, कभी कभार forcefully, कभी कभार like out of like stubbornness, and that's where I think a lot of our downfalls lie. So like yeah, what Raiyan said, it has to do with the sort of core philosophy your team members are following, and अब तक it's not paying off that well. Okay, yeah. So यहीं से आई थिंक जो मैं प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा
जिस वजह से आप दोनों को भी मैंने दावत दी थी, उसकी तरफ चलते हैं। और वो बेसिकली मैं यही क्या कहते हैं कि एक तो हमने बात की जो आजकल की हमारी ये कोर है, राइट? सो ये सारी नमूदार होती है, लाइक ये सारे प्लेयर्स स्पेशली पीएसएल की वजह से मशहूर हुए हैं, और पीएसएल की का होना भी एक बड़ी it's a pretty unique thing, because this is the first time that Pakistani cricket fandom can then be kind of siphoned into like different teams instead of everyone's kind of just after the same kind of team. And this is one of those things that, I feel me and my friends were very much involved in, like the years before the PSL आता है, etc etc. और अब पिछले साल, जैसे मैं आप दोनों को प्रोग्राम से पहले बोल रहा था, पिछले साल मेरी उम्र 40 साल की हो गई, और अक्सर मुझे इंटरनेट पे ऐसी चीजें नजर आने लगी जब जो मेरे अंदर के जो आवाज उठती थी कि आजकल के बच्चों को कुछ नहीं पता, and then I was like, I've become an old, and ये like I think for much of my 30s, like वो जो एक तो मैं मीन गर्ल्स की रेफरेंस है ना, मीन गर्ल्स का भी नया पार्ट आ गया है, बट जो ओरिजिनल मीन गर्ल्स में she's like, I'm a cool mom. And so I feel for many years I wanted to be like a cool mom and be like, what are the kids thinking? Yeah, I also think this. But I feel I've kind of crossed a threshold जहाँ पे अब मुझे जो मेरा दुनिया देखने का नजरिया है वो it's quite outdated. और क्योंकि बट्टा फास्ट की काफी ज्यादा जो ऑडियंस भी है, वो it's closer to my age than it is to yours. So I feel it'd be good for us all to get a reality check um, from the youth. तो शुरू करते हैं, मैं कुछ चीजें like I'm going to throw out some topics and I want to hear like what you guys think about it, right? So सबसे पहले मैं पूछूंगा कि millennial cricket fans, like what is and give me your spiciest takes. जो भी इनको ट्विटर पे ट्रोल करेंगे प्लीज इनको जाने दें, मैं इनको उकसा रहा हूँ, but give me controversy. What do you think of millennial cricket fans? Ryan, do you want to start? No, you go ahead. Then I'll gauge. I'll start with like, what are your thoughts on like idolizing fixers, which is like a point of pride for people my age. I mean, I was thinking about this the other day because I was watching an interview that Amir gave on Cricket for a couple of years ago, and I was watching it and I was like, I really miss Amir. I miss Amir the bowler. I miss when he was playing for us, and I think I also think it's not just an age thing because people still love Amir, but people are still. I think people are more critical of Amir for being a fixer than maybe you guys were of Asif for being a fixer, and I think that is where like people are very strict about their loyalties now, I suppose, Yeah. to the country, whatever that means. And but it is difficult to. Also, the thing with I don't really have anything against millennial cricket fans because I don't think it's an age thing. I think it's a superiority complex thing because even people our age, Okay. they're like, people our age, they're like, oh, these people just started watching cricket after the 2021 World Cup. So ये लोग तो post-COVID fans हैं, इनको भी कुछ नहीं पता cricket का. And I was very against that because I was like, वैसे ही the sport is dying, अब लोग देख भी रहे हैं तो इनको देखने दो. But then they sometimes do say things and I'm like, no. So it does. It kind of has to do with the badge of honor you sort of give yourself कि मैं तो 10 साल से cricket देख रही हूँ, so I should be able to have like more of a speaking authority on this than this kid who just started watching it last year. अब वो अलग बात है, वो बच्चा 6 साल का है तो obviously वो नहीं कर सकता कुछ भी. But I think it's very. I think we just have this very internal compulsion to be right regardless of the age group, and I think it's because even within like the Gen Z fandom, you said that we've been siphoned into FCs. Power FCs, and also like you look at social media after a cricket match, and it feels like you're reading a fiction writing contest because people make things up. People are like, oh, at 0 minutes 11 seconds of this video, Shaheen brushed off Babar's arms, which shows the sort of internal conflict that is happening, and this wasn't happening when Babar was the captain. And
that's not what happens, you know. And so I think it's just a very हमें बस लड़ने का शौक है, I think, on a very basic level. बिल्कुल, इसमें तो ठीक है, ये इस पे कोई शक नहीं कि स्पोर्ट्स फैंस जिस भी उम्र के हों बड़े ऑब्नॉक्शियस होते हैं और इसी Yeah. किस्म की मनहूस बातें कर रहे होते हैं. Raiyan, do you have anything that's specific to millennial cricket fans? क्योंकि अगर तुम नहीं भी बोलोगे ना तो मेरे पास कुछ receipts भी हैं, तो मैं I'll throw them out anyway. So, you know, you go ahead. So basically, like, as far as opinions on fixers, they can, like, I have like very stated, like, वो एक fixer का मुझे बहुत नफरत है, एक कुछ वैसेलों का, like, it's not specific, wide ranging discussion. Like, मुझे सलमान बट और मोहम्मद आसिफ से कोई खास शौक नहीं है. आमिर को हमने बहुत आमिर को, लाइक, हमारा बच्चा था तो वो कोई बात नहीं, गलती हो गई थी. वो दूसरी बात है कि जो हरकतें उसने की वापस आने के पहले का बाद, वो उससे ज्यादा गुस्सा दिलाया देन द फिक्सिंग पार्ट. सिमिलरली वसीम अकरम का ज्यादा वो फिक्सर, वो ज्यादा लाइक इट्स अ जॉन्ट कि वो बहुत से बॉट हो गए, वो लड़ने आ गए, तो तुम्हारा तो प्लेयर फिक्सर था, तो क्या कह सकते हो. So then I Isn't feel it? like what Rameen said is, Isn't it so funny that we Yeah. have like a population of fixers? Like we have a sample size of fixers that we How can sort of is- pick and choose from. I feel like that's the bigger problem. Like we have enough fixers for it to be a category. That this type of player is a fixer. but like, yeah, like Rameen said, it's mostly about being right and landa. So उससे ये सारी चीजें stem हो जाती हैं फिर basically. But yeah, as far as millennial cricket fans go, मतलब कभी कभार बहुत गुस्सा दिला देते हैं. But किस ज्यादातर बात पे? कोई मैं एक बात उस- तो बताओ. they, You want us millennials to get पर, attacked so bad. You guys are young, you'll survive it. Relax. अच्छा, by Fair. millennials, I want to know exactly which ages are you talking about. Yeah. So millennials right now are people between the ages of 29 to 42. I think that's अच्छा. what the range is. So basically people in their हाँ. 30s and early 40s. So basically, with like millennials, the prasla is that like a lot of it is like, मुझे एक तो यॉर्कर्स पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये यॉर्कर क्यों नहीं खिला करा रहे. ये इस पे तो ये यॉर्कर क्यों. अब कौन उनको बिठा के बैठाए कि भाई देखो तुम्हारे जमाने में इतने यॉर्कर्स नहीं होते थे, तुमको कुछ हाइलाइट्स याद है बस. दूसरी बात है कि तुम्हारे जमाने में वो बैट्स नहीं होते थे जो है कि वो के एजेस भी ऊपर से उठा के छक्के मार देंगे. फिर आपके टाइम पे बैट्समैन क्रीज इतना इस्तेमाल नहीं करते थे जितना इतना इस्तेमाल करते हैं. तीसरे तो ये यॉर्कर क्यों नहीं करा रहे. और फिर वो कहते लाइक द वे दे से कि हाफ वॉली करा दी, यॉर्कर करानी चाहिए. भाई वो हाफ वॉली नहीं करा रहा था, यॉर्कर कोशिश कर रहा था, वो हो गई. ये यार तुमने मतलब इतनी खूबसूरत बात की क्योंकि अभी तुम बोल भी रहे हो ना, एंड मैंने मतलब जो भी ये तुम्हारी सारी बातें जानते हुए भी मेरे दिमाग में एक ही सवाल है कि भाई यॉर्कर क्यों करा रहा. मतलब वो आई फील के आगे पीछे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. इन माय माइंड ये कि यार क्यों नहीं करा, ये हो जाती है. एंड एज यू सेड इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट बॉल्स टू बॉल. इट्स अ वेरी हाई रिस्क डिलीवरी, बट आई विल गो टू माय ग्रेव thinking कि यार यॉर्कर की नहीं करा रहे थे यहाँ पे. ये मैं नहीं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट, राइट. लाइक कुछ चीजों पे हमारा एक यू नो ऑब्वियसली हर जनरेशन के साथ होता है कि आप एक नजरिए के साथ जाते हैं. यू कैन ट्राई एंड चेंज इट, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स that you know, मतलब तुम मुझे जो भी डेटा दिखा दो, जो भी रैशनैलिटी दिखा दो, ब्रो यॉर्कर से बेहतर जवाब ही नहीं है किसी सवाल का. तो तुम कोई सवाल उठाओ उसका जवाब यॉर्कर है. उसी तरीके से मैं दूसरा पूछना चाहता हूँ. मैंने देखा है बच्चे ना अक्सर मजाक उड़ाते हैं वसीम भाई की कमेंट्री का, एंड it is you know, and obviously for It me is what it is. like I feel कि मैं मतलब you know मैंने 8 साल का था जब 92 का वर्ल्ड कप आया था. लाइक माय एडल्ट लाइक प्री टीन्स एंड टीन्स वर डिफाइंड बाय वसीम अकरम. तो मतलब वो मुझे तो थोड़ा सा ना ब्लास्फेमस लगता है कि अरे अरे हजरत के खिलाफ तौबा करो.
और अब मतलब आई अंडरस्टैंड कि जो बच्चे हैं बस उन्होंने वसीम भाई को देखा नहीं और अब वसीम भाई के इट्स 29.2 overs run rate required of 6.13 wind of 4 kilometers per hour. So what are your takes on वसीम भाई? Is there because of YouTube or whatever अभी भी उनका ऑरा जिंदा है या लगता है कि यार ये बाबे फिर से यॉर्कर और वसीम अकरम की बातें कर रहे No, as far as Wasim I Bhai mean, I goes, think it's huh. हैं? Sorry, Rameen, okay, why don't like, you go first? go ahead. I mean, I think it sort of started as a meme because at one point everyone picked up like these few statement lines that Wasim Akram says. He's like, "Oh, I had a chat with him this morning, and I reckon he'll." Blah, blah, blah. And I think it started there. I'm okay. I mean, I can say right now I'm okay with him. कोई मेरी tweet निकाल के बोल देगा इसने तो ये बोला था. But I also think it's more of a patience thing, like because we are so used to T20s that अब हम कमेंट्री में भी वो ट्रांसलेट होने लगा है एंड वी आर लाइक कि क्या बोलते रहते हैं. आई रिमेंबर अभी वर्ल्ड कप में देयर वाज दिस पॉइंट व्हेन वी वर प्लेइंग श्रीलंका एंड रमीज राजा वाज लाइक they need 138 in something balls. Will you see this as 138 in 18 overs or will you see this as 138 in 80 balls? And I was just like, why is he saying that? So I mean I think it's like a I think here I think is the age is a factor of like the person watching the game because हम बहुत जल्दी तंग आ जाते हैं, which I think is true for my generation. Raiyan, the Wasim Bhai's aura still alive for you? Yeah, Wasim Bhai's aura is Yeah. definitely still alive for me क्योंकि like Wasim Bhai is Wasim Bhai, you can't deny greatness. Like जो भी Yeah. आप stats उठा के देख ले उसमें वसीम भाई तो टॉप ही होंगे. So you can't deny कि वो बंदा ही था. But like it is much easier कि जैसे रामीन mentioned रमीज, तो वसीम भाई को तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो हमारे हैं. बट रमीज का नहीं. रमीज का तो जब रमीज बोलने लगे और आप फिर उसके जाके स्टैट्स देखने लगे टेस्ट क्रिकेट के और आप वो जो मेरे फिल्टर्स वुल्टर्स लगाता हूँ और फिर देखते कि ये बंदे इमरान फरहद लेवल ओपनर थे अपने टाइम पे और फिर ऐसे ज्ञान दे रहे तो फिर आप भाई रैम्बो साहब ने तो एक तो उसका करियर जो सा भी हो और उस पर आप बहस थोड़ी बहुत कर सकते हैं बट उसके बाद ही ट्वाइस like magnificently fucked up Pakistan cricket as the CEO and then chairman. 2 दफा इन्होंने एक मुशर्रफ के वक्त में और एक दफा किया है और पिछली दफा भी इन्होंने पिचेस का और बॉल्स का इतना बुरा हाल किया था कि took us like a decade of lost progress. इस दफा भी पिचेस के साथ उन्होंने सत्यानाश किया हुआ है बट हाँ रैम्बो no one likes. I feel रैम्बो के घर वाले भी don't like him but the thing is he did mess speaking up of like Rambo, a test. हाँ यार yes exactly यार जो आपका टेस्ट Thing is होम when- सीजन था वो तबाह कर दिया रैम्बो ने. he may have ruined the test season, but then you listen to him commentate and then you're like, maybe it wasn't so bad having him as your chairman because then at least he won't be on comms anymore. So like maybe this is a huge Ryan, you were saying something? Speaking of Rambo, and you were asking my dad's favorite cricketers. My dad's favorite cricketer, one of my dad's favorite cricketer was Wasim Raja. Yeah, Not man. Rambo, no. हमारे अब्बा का मुझसे थोड़ा I'm guessing would be maybe 10-15 years older to me. Like I can map him out and his like completely as these are the kind of fans that I was growing up with who were a bit older to me. तो वो वसीम राजा, इमरान खान, जावेद मियांदाद और जो मुझे सबसे ज्यादा तब चढ़ती है कि मैं कराची से हूँ और 90s में मेरे फैमिली मेरी ननियाल जो था वो हेविली कि लाहौर हमारे साथ जुल्म हो रहा है और ज्यादती कर रहे हैं और ये वो और इमरान खान जो है वो जावेद मियांदाद का करियर तबाह कर रहा है और इन सब ने मुझे मेरे मामू अम्मी इन सब ने एंटी कर दिया इमरान खान के टोटली एज अ क्रिकेटर बिफोर a politician or anything, right? And obviously, I just saw him in one tournament, and that was the extent of it. Fast forward 20 years later, और मामू जो सख्त एंटी थे इमरान खान के और जावेद मियांदाद भी जो एंटी थे इमरान खान के जावेद मियांदाद स्टेज पे चढ़े हुए हैं मामू जलसे पे पहुंचे हुए हैं and I'm just like guys like you have no integrity like
like you spent my youth polluting कि ये अच्छा है, ये गलत है, ये सही है, और फिर खुद ही अपने सारे आप लोग ने वो छोड़ दिए. um but sticking with 90s icons, what about Shoaib Akhtar? What are you guys takes on Shoaib I think he's so funny. I think whatever he did in his career, वो अपनी जगह है, but like the sheer comedic value he provides to this country, it's out of this world. I really love Shoaib Akhtar. Akhtar? I think I am biased. I think I don't know actually, a bit of both, but I think I'm always like a little bit biased towards fast bowlers, and so yeah, हाँ. I do like Shoaib Akhtar. Yeah. Raiyan, what's your take on Shoaib Akhtar? हाँ, शोएब अख्तर अगेन लाइक वो उसको स्टैट्स देखकर आदमी कह देता है हाँ जो भी कह रहा हो अभी बंदा तो था सही का I mean, but yeah, no, I feel like my association with Shoaib Akhtar became much better when I stopped like watching his YouTube channel or like listening to him in general and just talking about him on Twitter. What he then like you could like, you just refuse to acknowledge कि वो that's a part of his life और वो हो रहा है क्योंकि वो जब हो रहा था तब मुझे बहुत टप चट्टी थी उससे लेकिन अब आई एम फाइन विद हिम आई एम कंप्लीटली फाइन कि जो भी है पैसे कमाओ अपने यार जैसे भी करने 2000s में एक ही फास्ट बॉलर था उसको हमने रिस्पेक्ट तो करना 2000 में है एक ही फास्ट बॉलर था, which brings me to my sorry, हाँ Rameen, you go ahead. No, I think Raiyan makes a really good point. Okay, like once you stop listening to them, they sort of redeem themselves in your eyes, which leads me to think that are people who don't consume cricket as like online as we do, I would think they're a lot happier with the team. Like a normal person, if you're just watching a match and then closing it and they're not thinking about it for like the next 3 business days, I feel like that would be a really nice way to consume cricket. And I think we should think of doing that more often. I mean, मैं आप लोग को बड़ी यही राय दूंगा कि यही करो, क्योंकि मैं यही सोचता था कि पहले जब तक मैं सिर्फ फैन था and I wasn't working as a journalist, I wasn't friends with people who were like in the board, in the management वगैरह, तो हमें कुछ मतलब पता ही नहीं था कि अच्छा ये मैच हार गए, नया चेयरमैन आया, अल्लाह करे जीत जाए, ये बुरा था वो अच्छा था, and you had no idea also कि भाई डोमेस्टिक में कौन चल रहा है, मुस्तकबिल में कौन खेलेगा, तो आप एक दुआ पे चल रहे थे, चल गया नहीं चला. और जब से मैं आई क्रॉस्ड ओवर, तो वो एक लाइक आई लव टेलिंग दिस स्टोरी कि हमने मतलब जो अभी स्पेस यार का ग्रुप जो है और उसमें जो हमारे दोस्त वगैरह हैं, तो हमने वी ऑल वर्क इन द फर्स्ट पीएसएल टुगेदर, वी वर्क इन द सेकंड पीएसएल, और उसके कुछ महीने बाद Pakistan loses to India so horribly that we meet at our friend's house. शोएब के घर पे हम छत पे बैठते हैं, हमने कहा अच्छा ठीक है, तुम बोर्ड में हो, तुम इस पीएसएल टीम में हो, तुम सहाफी हो, हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे बचा सकते हैं, तुम ये आर्टिकल लिखोगे, मैं ये करूंगा, तुम इससे बात करोगे, फुल हमने ये प्लान्स बनाए, ठीक है, और मतलब एक बड़ा एजेंडा पॉइंट था, हमने कहा बस तबाह और ये क्रिकेट कुछ नहीं हो सकता. And this was of course the group stages of the 2017 Champions Trophy. Pakistan won every single match after that. Oh my god. So उसके बाद था कि यार इस टीम का मैं क्या कर सकता हूँ. When you feel at this point, it surprises you completely. But yeah, like the coming back to it was कि वो once you're inside the बेसिकली कि आप देख रहे हो, जैसे रामीन बात कर रही कि once you start following it so closely, I think उससे आपको बेशक बहुत ज्यादा मायूसी भी होती है. It's a lot better, and that was also why I wanted to ask you, because all these guys that I venerate, अब वो तो अब let's come to Mohammad Asif for example, right? क्योंकि उसने हाल ही में कहा था कि मैं बाबर घटिया प्लेयर है, मैं उसको 2 मिनट में खत्म कर दूंगा ये को. And I mean, I'm a complete Asifist apologist. I attended his trial in London. I interviewed him on the Oh my first God. game that he came back to. In fact, वो भी एक बड़ी जबरदस्त कहानी थी, क्योंकि मैं अपना मास्टर्स करने गया था 2009 में और फिल्म मेकिंग में था, और साल के शुरू में उन्होंने कहा कि आप अपना थीसिस क्या करेंगे, अभी से एक आइडिया देते हैं. तो मैंने उनको जो आइडिया सबमिट किया था कि 2010 में जो हमारा थीसिस का टाइम होगा, उस वक्त पाकिस्तान की टीम दौरा कर रही होगी, तो I'll try and make a fly on the wall documentary of that tour.
Unfortunately, that didn't happen. So, but yeah, like so, Mohammad Asif to me, though, is just unbelievable. Khas तौर पे what he said about Babar was super cringe. Was really like, please stop. So, what was your take on it, and then what was your take on Mohammad Asif in general? Means, रामीन तुम ही शुरू करो. रयान जो है वो वाली मीम नहीं होती है जो बंदा बोलना चाह रहा होता है मगर बोल नहीं रहा होता है वो उस मोड में. You'll have to start. He prefers not to speak. Thing is, I was never that attached to Asif the bowler because जब ये 2010 वाली सीरीज हो रही थी उस वक्त मैं I think 8 या 9 साल की थी. And that time I only knew Amir because Amir had won us the T20 trophy. I was like अब तो ये बहुत ऐसे तक खेलेगा हम सबको मजा आएगा ये. And then this happened, and then the only two people I remember per se during that time was Salman Butt because it was a huge deal कि अब हमारा captain बनता है. And I remember Amir because he's Amir. But with Asif, I think our generation also has sort of built up this consensus that whenever an ex-cricketer says something about a current cricketer, we take it with a grain of salt because I As mean we should, they do बिल्कुल. talk a lot. They do talk a lot, Yeah. like a lot. And I think Yeah. it's the same thing with a lot of countries. Like you see Indian ex-cricketers talk about their current cricketers. I'm like, what are you saying? And you think they understand. Okay, I'm not going to say about who understands the game or not. But yeah, I'm sorry if this offends, but I'm fairly indifferent towards Asif. Like I watch his spell sometimes. I'm like, हाँ, अच्छा था. But yeah. Yeah, no, that's good content. It was really funny because before the podcast, you were like, before we started recording, you were like, hey, we're going to talk about Asif. And the first Asif I thought of was Asif Ali. I'm like, okay, a little concerning. Why not? Terrible. But yeah. So as far as like ex-cricketers saying stuff, वो कहते अभी कहते not even India और subcontinent को छोड़ दें आप. कहते ऑस्ट्रेलिया में किम ह्यूज कह रहा है कि कैमरन बैनक्रॉफ्ट को ये लोग ले रहे नहीं है क्योंकि वो न्यू साउथ वेल्स से नहीं खेलता है. Meanwhile, they've been like since Bancroft's debut, there's been like one New South Wales player that's played for Australia and like 4 West Australians. So लेकिन बोलना तो सबको होता है. Yeah. So as for my opinion on Asif, देखिए मुझे बहुत होता है कि लाइक सब लोग को होता है कि बहुत अफसोस हुई कि आसिफ चला गया. एंड लाइक मुझे तो अफसोस तो लाइक ऑब्वियसली मतलब बॉलर तो ठीक ठाक था. डिग्री ऑफ ठीक ठाक इज debatable, but he like test bowler tha, and he would have played in the attack for like 3-4 years, maybe more. So and like मुझे तो obviously अफसोस ज्यादा आमिर का होता था हमेशा. लेकिन आसिफ का अफसोस मुझे अजीब लगता था क्योंकि ये लोग जो लाइक ज्यादा रोते थे उसके बारे में. एक तो है कि लाइक टेस्ट मैचेस हम कितने खेलते हैं यार. तो वो टेस्ट मैचेस में ही ज्यादा थे. दूसरी बात है कि यार लाइक यू लुक थ्रू हिज क्रिकेट फो, लाइक वो जो क्रिकेट फो की प्रोफाइल के नीचे जो सारे आर्टिकल लिस्ट आते हैं उसमें आसिफ का हर दूसरा तीसरा आर्टिकल है कि इसने इसके साथ लड़ाई कर दी, इसने इसके साथ लड़ाई कर दी, इसने दुबई एयरपोर्ट पे इसके ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था, इसने शायद वो कहते शोएब अख्तर को बैट मार दिया था. लाइक नहीं, शोएब अख्तर ने इसको बैट मार दिया था. तो मैं कहता हूँ कि ये जो बंदा इसने वीना मलिक के पर्दे चुराए थे. I feel that's my favorite Mohammad Asif story. But see the thing about millennials is that now every time like a fast bowler smiles at a batter, like अभी हारिस ने हंसना शुरू कर दिया, they're going to quote that Asif article, be like ये होता है fast bowler जिसको गुस्सा है, why are you smiling at the batter, you should be hitting them. And then I'll be like, oh. Yes, I'm really actually, this is a very good point क्योंकि एक चीज जो ना तो मैं me, Abdul Ahad and Ariha, we do this show called Backbenchers, and Ariha is you guys' age, Ahad and I are the same age, similar ages, और हम ये कंप्लेन करते थे कि यार आजकल बहुत होलसम हो गया ना, ये बड़ा प्यार मोहब्बत है. प्लेयर होता है कि वो थोड़ा मार पिटाई कर, like, and then we were both listening and we're like, God, we're so toxic, but like
डेफिनेटली कि ये क्या यार दोस्तियां वोस्तियां बना रहे हो गाली शाली तो ये क्या सीरियस हो does but do you guys Ramin, you tell me, you prefer the wholesome people, or you don't think this is a debate worth having? I do prefer the wholesome. I would like it if people on my screen weren't yelling at each other, like CDC baat hai. But but I also do think a lot of this. I think a lot of I think the wholesome critique is seen as a valid critique of like the way people play. कि लोग इससे नहीं खेल रहे हैं because ये बहुत wholesome हो गया, and I think that just makes no sense to me. मतलब why लॉजिकली सोचो, लाइक बंदा ज्यादा हंस रहा है इसका मतलब ये थोड़ी उसको खेलना नहीं आता. आप खुद सोचें आप कहाँ से लेके आए हैं पॉइंट, राइट? सो आई जस्ट फील लाइक द क्रिटिक इज मिसप्लेस्ड. I understand if you want to watch a particularly like aggressive brand of cricket, or if you want to be more serious about the sport. It's such a stupid sport, first of all. Like, it's the most unserious sport ever, and you want to be serious about it. Like, so I think the best like cricket watching experience happens when you sort of submit yourself to how funny it is. Like, once you start finding comedy in it, I think it's the best sport in the world. But wo separate end. But yeah, I पाकिस्तान से don't. बेहतर कॉमेडियन Yeah, है भी नहीं कोई. exactly. And yeah, I don't think it's all that relevant. And especially because like being a female fan, मैं तो कुछ बोलूंगी and people will be like, हाँ ये fan girls आ गई, इनको तो कुछ आता ही नहीं है. LBW बताओ क्या होता है. I'm like, ठीक है please. Yeah. Okay, मुझे नहीं पता. Ryan, your thoughts on the wholesome discourse? Is that something that you pay attention to? No, I feel like 20 years down the line कोई धमाकन फास्ट बॉलर आएगा जो सब लोग से के साथ लड़ रहा होगा, और फिर हम कहेंगे कि ये क्या कैसा हो गया. शाहीन और हारिस जाके इस तमीज से बात करते थे लोगों से, ये खामखा सस्पेंशन बिल्डअप कर रहा है टीम को. और इस चीज से मुझे याद आया, आपके वालिद साहब का क्या ओपिनियन है wholesomeness पे? He doesn't really have an opinion. I haven't asked him. Maybe. कि मेरी अम्मी अब जो भी क्रिकेट मैच देखती है और पाकिस्तान अक्सर 90% हार ही रहा होता है, तो उनके जो ज्यादातर सवाल यही होते हैं कि ये देखो ये मुस्कुरा क्यों रहा है, ये खड़ा हुआ ऐसे दांत निकाल के बैठा हुआ था. Definitely. To be fair, as someone who grew up watching Umar Akmal and Kamran Akmal as a primary wicketkeeper, and they were smiling right after dropping their catches, then I get it. Then I understand. I'm like, why are you laughing? Like, after ruining my life. Then I get it. But yeah, so it kind of does make sense when you're losing and they're happy, and आप घर पे बैठ के हाथ सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं. तो I sometimes it makes sense to me. But वो ढिठाई वाली बात हो गई more than like what it says about you as a player. Yeah, well, Ravi, Raiyan, I had a lot of fun talking to both of you. Thank you so much, show पे आने का, और for your predictions, everything. और जो भी लोग इनको ट्रोल करने वाले हैं, तो ध्यान रखिए कि अब आपकी काफी उम्र हो गई है, थोड़ा आपके बीवी बच्चे हैं, उनका ख्याल रखें, छोटे बच्चों के साथ इंटरनेट पे पंगा ना लें. अगर नौजवान लोग आप दोनों को ट्रोल करें, I can't be held responsible for that. I can speak for people my age. The rest you guys need to handle. But Raiyan, Rameen, thank you so much for joining. That's all for Batta Fast this time around. Jald aayenge वापस, I hope, but I'm not going to promise anything. Till then, take care. Allah Hafiz.